Welcome back, guys. हम करेंगे dynamics question 8, paper 2. Let's start. Question 8. At town B, the car makes an emergency stop. The total distance of the car is the thinking distance added to the braking distance. You should remember this by now. आंखें बंद करके दिमाग में 10 दफा रिपीट करें. Stopping distance is equals to stopping distance is equals to thinking distance plus braking distance. ये याद करना है आपने. डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय थिंकिंग डिस्टेंस. तो आप फॉर एग्जांपल गाड़ी पे जा रहे हो एंड यू सी समथिंग अहेड, यू सी अ स्टॉप साइन अहेड. फर्स्ट यू आप उसको दिमाग में लाओगे कि यू हैव टू स्टॉप देयर. इट्स अ स्टॉप साइन, यू रीड इट, राइट. आप रीड करते हो, आपके दिमाग में जाते हो, यू हैव टू रीड इट, बट at that time the car is still moving, right? So you're gaining distance. So that is what the thinking distance is. The distance, ये है the thinking distance. Distance traveled before brakes are applied after seeing an emergency, just like the scenario I presented. The brakes on a car work badly. This increases the braking distance. एक तो brakes are used to stop the car, right? This increases the braking distance. Take two other factors that increase the braking system distance. For example, आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी पे और बाहर फॉर एग्जाम्पल बारिश हुई हुई है, ठीक है ना, बारिश हुई हुई है. सो देयर विल बी अ lubricant between the car and the road, so it will increase the braking distance क्योंकि the in order to stop the car you need friction, and because of the water, because of the lubricant, there is less friction between the car and the road, between the tires and the road. So one will be like weather conditions के बारिश हुई हुई है, the road is wet by any means, ठीक है ना. सेकंड, जो टायर होते हैं ना, इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन व्हाट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर एंड द सरफेस इज. ठीक है ना. अगर कोई सरफेस, इट इज अ स्मूथ सरफेस फॉर एग्जांपल, इट इज अ स्मूथ सरफेस, देन द कार will take a longer time to longer distance to brake. ठीक है ना. If the surface is smooth, for example, and otherwise vice versa, the tires are smooth. अगर टायर स्मूथ होंगे, अगर टायर घिसे हुए होंगे, घिसे हुए टायर्स मतलब बीच में जब आप शुरू शुरू में टायर्स लेते हैं ना, उनके बीच में लकीरें होती हैं, इनके बीच में लाइंस होती हैं, विच डिटरमिन व्हाट द मतलब टायर की न्यूनेस चेक कर रहे हैं, कितना कितने न्यू है, कितने सही है, कितने यूजेबल है, कितने यूज्ड है, राइट. So that is another factor, that the tires are old. Old tires will not produce as much friction as new tires. अच्छा, अब इससे देख लेते हैं. सॉरी. Any2, poor tire surface. Tire surface अगर smooth होगी, then the braking distance will increase. Poor road conditions, rain, ice. जब मैंने आपको समझाया high speed of the car. अच्छा, अगर गाड़ी की हाई स्पीड होगी, देन ऑटोमेटिकली दैट मेक सेंस कि गाड़ी को ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस लगेगा ब्रेक होने में. अगर आप गाड़ी को 10 मीटर्स पर सेकंड पे लेके जा रहे हो और 100 मीटर्स पर सेकंड पे लेके जा रहे हो, देन which one of the cars will stop earlier, excluding the stopping distance, I mean excluding the thinking distance? The car which is going on a slower pace. अच्छा, mass of the car, weight of the car, ये भी डिपेंड करता है. वेट ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा, मैथ ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, राइट. आपने देखा होगा कि इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर अ ट्रक टू स्टॉप देन अ स्मॉल कार. वाइस वर्सा, आपने कोई वेड़ा देखा हो, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर द वेड़ा टू स्टॉप because the mass is pushing it, it's taking the mass with it, right? So it will take a longer time for a Vera to stop than a Bakra. Brakes are applied less force to the pedal. That is a very obvious one. It's a very general question. अच्छा, आगे देख लेते हैं. The mass of the car is 120 kilograms.
Just before the brakes are applied, speed of the car is 30 meters per second. Calculate the kinetic energy of the car before the brakes are applied. Kinetic energy कैसे निकलती है? एक सेकंड सोचें. 1/2 mass into v square. इट्स 1/2 v2 स्क्वायर v स्क्वायर. तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1/2 mv स्क्वायर. 1/2 इंटू मास क्या है? 1200. v क्या है? 30. और इसको हम स्क्वायर कर देंगे, राइट? इसको हमें स्क्वायर करना है. सो दिस विल बी द आंसर. तो 0.5 इंटू 1200 इंटू 30 square, which will give us an answer of 540,000 joules. 540,000 joules. 540,000 joules. फिर से एक दफा कर लेते हैं. 600 इंटू 900 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 600 into 900 will give us 50. Okay, that's well and good. So 540,000 is the kinetic energy. The braking force that stops the car is 1800 newtons. Calculate the deceleration of the car. 1800 newtons is the braking force. ठीक है ना? तो हम F is equals to ma लगा लेते हैं. Force is 1800 is equals to mass क्या होगा गाड़ी का? 1200 into A. 1800 divided by 1200 will give us, I think, 1.5. So 1.5 meters per second square. That is the right answer. Explain why the temperature of the brakes increase during the braking. Because the main force that stops the car is the frictional force. पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस, आगे लग रही है गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स, राइट? सो जब फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, इट प्रोड्यूसेस, it produces heat. अपना हाथ ले, अपनी finger ले and rub it on your arm, like fast, very fast. You will see that there will be thermal energy. ठीक है ना? There will be thermal energy because of the friction. ठीक है ना? तो friction produces thermal energy, kinetic energy changes to heat. That is a transfer in energies, work done against friction. अच्छा, sorry. अपनी finger ले and rub it on your arm, like rub it on your other arm very fast. You'll see आपको एक फोर्स चाहिए होगा टू ओवरकम द फ्रिक्शन, एंड व्हेन यू ओवरकम द फ्रिक्शन, हीट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है ना? सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड. थैंक यू फॉर वाचिंग. अल्लाह हाफिज. This is another example of water being a lubricant between the tires and the road. So yeah, I thought I should add this.